ऐसा मतलब उत्तेजित अंदाज में, he's always this super cool, super calm person. Welcome. It's so good to see you, and it's an honor to be standing with you. I'm gonna shake your hands first. He's like, अरे ऐसा क्या बात है ना? So welcome. इससे पहले कि मैं बाकी लोगों को यहाँ बुलाऊं, I have a question for you. और जो कि मुझे रिक्वेस्ट किया गया है, हुक्म दिया गया है, हर तरीके से बोला गया है, हिंदी में पूछना. Please tell me कि why is it so special that KGF में emotional quotient जो है, उसकी बड़ी सारी बातें हो रही हैं. Because we've seen a lot of films, we've seen a lot of action films, dramatized films, stylized films, but here emotional quotient, उसके साथ लोग बहुत relate कर रहे हैं. Please tell us something about that. I think that's the soul of the film. Right. It's not just action, it's about the emotion. I always believe action will be enhanced with the emotion behind it. Right. So that is the main core point of the cinema. The cinema is about that one mother, that lady, her dreams and her struggle. It's not about Rocky, but it starts with her. Right. And Rocky takes it to another level. Yeah. You know, we can't keep calm. मतलब मैंने बाहर देखा है, I am super excited. How are you always in that zen mode? मतलब आराम से. How do you do that? Please बताओ यश भाई. अभी क्या कर सकते? We have during the preparation of the film or script time पे or shooting time पे we'll be stressed. Right. You know, we'll be thinking about what can we do. Once it is done, right. Now it is not in your control. Right. So we are given our best at that particular time, and now we are just hoping people will like it, and like you all, we are also excited to see those reactions. We are more than super excited here. And now, ladies and gentlemen, would like to invite on stage the Kaptan Sahab, whose vision we've seen on the big screen. We've loved it. Give it up for Prashant Neel Sahab, ladies and gentlemen. बहुत सारे सवाल जवाब है, because this is one movie जिसके teaser की अगर मैं बात करूं, it is the most viewed and liked in the world. 250 million views, sir. Trailer की अगर मैं बात करूं, I've actually got all the statistics here. First Indian film to have 109 million likes in 24 hours. Sir, how do you do it every single time, sir? Firstly, thank you for the Maharashtra press for being here. Like you said, the emotion. And he also said it before. I am hoping that when people walk out of the theater, there is Adira, there is Rocky, there is Ramika Sen. Yeah. Up and above all this, I'm hoping that people go out and think about this just as a mother and son's movie. Yeah. That's all I'm hoping. It's a promise that is being kept. And आपने जो प्रॉमिस किया था सर ऑडियंस के साथ, वो दिख रहा है यहाँ पे रंग लाता हुआ. एक बार जोरदार तालियां डायरेक्टर साहब के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन. द फर्स्ट कन्नड़ा मूवी जिसने इस तरह से तोड़फोड़ किया, द फर्स्ट कन्नड़ा मूवी जिसको 5 लैंग्वेजेस में बनाया गया, दैट्स इन इटसेल्फ अ बिग थिंग. नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमबाले फिल्म से वी हैव दिस जेंटलमैन कॉल्ड कार्तिक गौड़ा साहब. उनके लिए भी मेरे पास सवाल है. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द पर्सन जिन लोगों ने मिलके इसको एक्चुअली बैक किया और इतना बड़ा बनाया. वेलकम कार्तिक सर. A very simple, a very serious question, sir. Everybody would want to know the answer to this question. और बहुत seriously जवाब दीजिएगा sir. KGF 3 के लिए sir launch के लिए कब आना है, and where do you want me to come and do the press meet, sir? Whenever Prashant gives us the script. अच्छा. So when are we doing that, sir? He's not answering that. We'll be back. I am done. See, I am done with it. We are going to be back for KGF 3, Chapter 3. So, एक ऐसा chapter, this is something that people are swearing by. They are like, this is the movie that's going to break all the records. It has already done that social media के ऊपर. What do you have to say on that? From a producer's point of view, sir. Mula. See, after Chapter 1 was received so well, so the expectations, I think, when we have seen the film, we feel that we have met the expectations just to the audience now on the 14th, and I hope they feel the same. Absolutely. You've celebrated a lot of birthdays, sir. हर बर्थडे पे आपने कुछ सरप्राइज दिया है. 14th April, I'm going to write it down and give it to you. 14th April is box office का birthday, sir. So a very happy birthday to box office, because KGF Chapter 2 is releasing on the 14th of April. Now, ladies and gentlemen, to invite on stage, thank you so much. वाह, अच्छी बात बोली मैंने शायद. Okay, the very gorgeous, the very talented Srinidhi Shetty, ladies and gentlemen, give it up for her. Come on, थोड़ी तालियां बनती हैं यार. रीना जी का स्वागत है.
वेलकम, सो गुड टू सी यू. मुंबई में आपले स्वागत आहे एंड वेलकम. अब मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे, इन द फर्स्ट चैप्टर KGF चैप्टर 1 वी सॉ दिस बैंटर बिटवीन यू एंड रॉकी भाई. हियर व्हाट इज, ओह सॉरी, आई शुडंट हैव सेड रॉकी भाई. हमारे लिए रॉकी भाई है, ऐसा थोड़ी है. ओके, सो इज दिस बैंटर गोना कंटिन्यू? व्हाट इज गोना हैपन इन चैप्टर 2? Well, I think we should keep the mystery because इतना साल तो वेट किया है, अब सिर्फ 10 days, 9 days. What do you guys want? Banter, romance, क्या चाहिए? Everything? रहेगा मसाला, पूरा मसाला. We want that, वो कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए. सब मिलेगा आपको. ठीक है, बस she said it. पैसा वसूल. Oh, paisa vasool. She said it. And now, ladies and gentlemen, she is fabulous on the screen. जब आती हैं आग लगा देती हैं. And she is this शहर की लड़की जिन्होंने पूरी दुनिया में आग लगाई है. We love her. And how the most amazing Raveena Tandon, ladies and gentlemen. That smile's gonna kill all of us. Welcome. So good to see you. And I have this question for you. Why are you being so I don't want to call it rude, लेकिन आप रॉकी भाई के संग क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो? प्लीज उसको करने दो जो करना है ना. ठीक है, फोकस आपकी तरफ शिफ्ट कर देती हूँ. ज्यादा बोला तो घुस के मारेंगे. अब बच रही है तालियां. Talking about the character that you're playing, it's a very powerful character. जी. आजकल की फिल्मों में, स्टोरी में, जिस हिसाब से ये विमेन एम्पावरमेंट की बात करूं या वो पावरफुल कैरेक्टर्स की बात करूं जो महिलाओं को मिल रहे हैं, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? आई थिंक हाई टाइम था, क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान ऐसा देश था जहाँ पहले इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और वो बहुत साल पहले, जहाँ आज तक अमेरिका में भी एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं हुई है, और उसको फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं और हम लोग को अब तक डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं. तो बात ये है कि इट वाज हाई टाइम कि हमारे सिनेमा में भी वो रेवोल्यूशन है, और वो एक एवोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है और होते आ रहा है. और ऐसी बात नहीं है कि अभी ही हम बना रहे हैं या हम अपने फीमेल टैलेंट को रिकग्नाइज कर रहे हैं. ये सदियों से चलता आ रहा है. हमारे हर एक डेकेड में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पिक्चरें बनती आ रही हैं, जहाँ से मदर इंडिया से लेके आज तक. तो मैंने कुछ खास पाथ ब्रेकिंग नहीं किया है, बट आशा करती हूँ कि सबको हमारा काम अच्छा लगे, फिल्म अच्छी लगे. मेहनत की है सबने, एंड I hope it makes the difference. Of course it will, and congratulations on this another blockbuster जो कि आपकी फिल्मोग्राफी में जुड़ने जा रही है. And now, ladies and gentlemen, to invite on stage, he is मैं क्या बोलूंगा, स्वैग उनका मिडिल नेम है. Give it up for Sanjay Swag Dutt, ladies and gentlemen. Baba, welcome. You can come here. स्वागत है आपका. Thank you so much. Thank you. For this, for the look. Of course, everybody is talking about that. जिस तरह से आपके रंग ढंग हैं, जैसे आप चलते हैं, फिरते हैं, दिखते हैं. लेकिन मुझे बताइए, as a cine lover, because all of you are brilliant artists. सिनेमा जैसे यहाँ पे हम सब के अंदर जगता है कि यार फिल्म देखनी है. Of course, आप सब के अंदर भी है. So as a cine lover, when you see KGF chapter 1 और फिर वो जर्नी अब तक KGF chapter 2 तक, क्या कहेंगे? सबसे पहले नमस्कार. हो. हाँ, मैंने KGF पार्ट 1 देखी तो अपन तो हिल गया था भाई, और रॉकी भाई को देख के तो ज़्यादा हिल गया था, और प्रशांत का डायरेक्शन देख के और भी ज़्यादा हिल गया था, और श्रीनिधि को देख के तो गिर गया था. लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि अधीरा का कैरेक्टर मेरे पास आया, और ये करते हुए मुझे इतना मज़ा आया, कांट टेल यू. आई मीन द लुक, द फील ऑफ द फिल्म, इट वाज जस्ट फैंटास्टिक, एंड आई वांट टू थैंक द टीम ऑफ KGF फॉर हैविंग मी. एंड अपन चैप्टर 3 में है कि नहीं भाई? Just joking, but I'm honored to be a part of this, and
आई होप आप सब इंजॉय We're करेंगे. gonna love it and it's gonna be a dhamal at the box office everywhere. Prashant sir, कुछ और guests को मैं invite करूँगा, but before that I have another very important question to you. You know, we talk about records, we talk about films breaking records, but here I've got to know कि Ormax research के हिसाब से this is KGF Chapter 2 is the most awaited film पिछले 2 साल से sir ratings के अनुसार and you know people जो इस rating के साथ जाते हैं. What do you have to say on that? That weight audience ka? We did not start this movie trying to make it a pan-India movie. It was a Kannada movie that we started off with. Yash took all the initiative to take it outside. Right. And that credit should go only to him because he's the only one who believed that this subject can go outside. Right. And a lot of people there also will connect with it the way we probably would have connected only in Karnataka. Right. So I'm thankful to everybody who has loved the movie and all the support that they are giving us. We are thankful to you and this entire team for bringing us this movie. And 14 April को सर एक बार वापस से जब देखेंगे तब धमाल की बातें आपको बताएंगे. But before that, would like to invite on stage, ladies and gentlemen, Mr. Devang Sampath, CEO Cinepolis. He's here. Give it up for Mr. Sampath. And also Rahil Ajani Saab from Seawoods. Give it up for Ajani Saab, ladies and gentlemen. We have a lot of surprises for you. बहुत खास चीजें हैं कुछ जो आपने अभी तक नहीं देखी होंगी लेकिन उससे पहले sir this one's for you. Please tell us about this amazing collab with the movie KGF Chapter 2. कुछ बहुत खास होने वाला है और अभी तो हम IMAX में ट्रेलर देखने वाले हैं but please tell us something about that. Thank you. I think welcome all the media. I know a lot of people have traveled from far off. Yes. But हमें दिखाना था कि ये प्रॉपर्टी जो हमने बनाई यहाँ पे वो कैसे सिनेमा गोइंग को चेंज कर रही है. एंड बिफोर दैट आई वांट टू थैंक यश, नील एंड एंटायर क्रू ऑफ KGF. इट वाज डिफ़िकल्ट. 2 साल हमने टफ निकाले हैं जो कोविड पीरियड था और वो कोविड पीरियड में मूवी होल्ड करके रखना, इट्स एन एक्सपेंसिव फिल्म और इतनी महंगी फिल्म को होल्ड करके रखना और फिर आज आई थिंक इवन आफ्टर द सेकेंड लॉकडाउन दे हैड committed on a date and they honored that date, so really thankful for that. I mean, I really appreciate. And one thing I can tell you that with this movie the vision, Mr. Vijay who's not here and Prashant and Yash whom we have been interacting on a regular basis, after they thought that they want to take this movie pan India, the only vision they had is अगर सबसे बड़ी पिक्चर इंडिया में है तो वो कितने लोगों ने देखी है. अगर 130 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ लोग मूवी देख रहे हैं तो हम उसको कैसे बढ़ाएं. I think when you go with that vision, everything falls in place. So really thankful for that, and we hope that 14th is the date where we have already started advances, by the way, and that advances is anyway skyrocketing. We don't need any research report. We are seeing at the box office. We are seeing online booking. It's already skyrocketing, and good luck to you. Thank you so much, sir. A few words on this upcoming release and ये जितने superstars हमारे साथ हैं sir. Thank you everyone for coming to Seawoods Grand Central Mall in almost in the Navi Mumbai, which is the only shopping center 1 million square feet, and we are delighted to be part of this association. Cinepolis, the largest cinema in the Navi Mumbai, definitely will give a boost. I want to address this. Is the only, I think, Cinepolis which is about the railway stations. So local trains are just going below this. Okay, that's the unique part of this. A transit property which is about the railway station, connected to the railway station. The local trains going below the office tower, residents next to the theatre, and 1 million square feet, 300 stores, and we are delighted to be part of these associations. Thank you, Devang, and all the Star Guard coming all the way to Seawoods Grand Central Mall. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for that wonderful thing you just shared with us. और रॉकी भाई ने ज़्यादा ज़ोर से ऐसे किया तो पता लगा ट्रेन के ऊपर हम लैंड कर गए. तो anyway, रॉकी भाई, before we also have this amazing IMAX poster that we'll be showing right now. उससे पहले, there are a lot of your fans who are watching this at the comforts of their homes. और मुझे पता है आपके बहुत सारे ऑफिसेज में भी लोग देख रहे हैं, बॉसेस से छुप के. बॉसेस भी लगे हुए हैं, डोंट वरी. सो वन मैसेज फॉर ऑल योर फैंस राइट नाउ. We just have to thank them. It's because of the support what they gave, and they gave us that confidence that we can go out and fight. I always trust my fans and audience because
if a person like me can become an actor, it is only because they are not biased and they just respect talent and they recognize hard work and they give them in many folds, you know, they bless them. So I have to be just thankful and keep supporting us till we do a good job. And also let me be very... This and is the give reason, us sorry. encouragement in a big way so we can go and take on the world. Thank you. This is the reason he is the rocking star, ladies and gentlemen. मतलब कितना humility के साथ सब कुछ दूसरों को दे दिया. It's time to take a look at the digital poster here. Would request all you wonderful people to kindly be seated. Raveena ma'am, please एक बार वापस से grace the stage. Thank you so much. Would like to invite on stage Srinidhi. Please आइए with that amazing smile of yours. Karthik Gowda साहब, एक बार वापस से would request you to be here with us for this amazing announcement. And now, ladies and gentlemen, the director साहब, प्रशांत सर के लिए जोरदार तालियां, please. जोरदार बोला था क्या कर रहे एकदम? Of course, we were talking about the emotions, so everybody is so एकदम. Also, would like to invite, डांट पड़ रही है मुझे साइड से, मैं अभी देखता हूँ क्या हुआ है. Would like to invite on stage, ladies and gentlemen, rocking star Yash, come on. And also, we have this gentleman with us here, जिनके लिए इतना ही कह सकता हूं, जितनी blockbusters हम देखते हैं, उनमें से most of the blockbusters happen because of him. Mr. Anil Thadani, ladies and gentlemen, AA Films से. Sir, so good to see you. The ever so handsome Thadani साहब is here with us. And Mr. Devang, एक बार वापस से आपसे request करूंगा मैं यहाँ पे आए. And now, ladies and gentlemen, for the moment, advance booking की बात करने वाले थे हम इस फिल्म की. Madhu ji, I can see that smile on your face. I'm sure you're going to do that. The first thing when the advance opening of this movie starts. So UK में we've already sold more than 5,000 tickets and that too in 12 hours. So that's the craze of KGF Chapter 2. इंडिया में क्या होने वाला है, we can't even imagine. कल देखेंगे जो होगा, लेकिन फिलहाल के लिए it's time for the big announcement. दिल थाम के बैठिए is what I can tell you right now. नहीं, मेरे पास नहीं, मैं यहाँ थोड़ा बीच में रखते हैं. Thank you. Sir, it's time to do the honors and announce the date of the advance booking of KGF Chapter 2. Would request our rocking star Yash Sahab, Sanjay sir, ma'am, Thadani Sahab, please. Srinidhi ji, Prashant sir, please. Come, sir. The moment that all of us have been waiting for, ladies and gentlemen, the advance booking of KGF Chapter 2 begins when? And now, ladies and gentlemen, अब हमें पता है कब अपने tickets book करने हैं, कैसे book करने हैं. Can we have the chairs now because it's time for the media Q&A. आप लोग I'm sure अपने questions के साथ तैयार हैं. Suddenly, you know, question for you. I'll come there. You know, each and everyone who's worked on this movie. Sorry, ma'am. Each and everyone who's worked on this movie, उनका वो पसीना खून दिख रहा है यहाँ पे. The technicians, you know, the technical crew, they are like equally important. Music की बात करें, action की बात करें, department of photography की बात करें. So what do you have to say about them, sir? I already told that they're some of the best in the world, and you know, I think I want you to watch it on 14th and tell me that I'm right on that day. Each and every frame, what we see over there is like a picture.
जिसको पेंट किया गया है ऐसा लग रहा है सर. इट्स मार्वलस. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड सर एक सवाल रॉकिंग स्टार यश के लिए सर, ये आपके और मेरे बीच है, कोई नहीं सुन रहा है, nobody else is gonna listen to this. Please tell me, is he always this calm, like yeah, set पे? How do you manage him? Sir, आपको nobody will get to know. Please tell me. He was born a rock star, so yeah, that is very natural for him. Right, give it up for rocking star Yash, ladies and gentlemen, one more time. Would request you to grace the stage. Karthik sir, please. Prashant sir, Sanju sir, yeah, please. Raveena ma'am, please. Srinidhi ji, आइए. Please have a seat. Jaldi, jaldi. No worries. Yes, now we can shoot. Our questions. कहाँ से शुरू कर रहे हैं? मैम से, जी बताएं. हेलो. हाँ, मेरा सवाल सबसे पहले डायरेक्टर से है, प्रशांत जी. ये जो फिल्म है, ये साउथ की बहुत सारी फिल्म्स आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो क्रिटिक्स को पसंद नहीं आती हैं, सिर्फ उसमें मार धाड़ होती है. लेकिन इसमें एक कहानी है, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर जब हम देख रहे थे प्रेस शो में, तब हमें लगा था कि उसका जो ट्रांसलेशन हुआ है वो भी बहुत ही तगड़ा है. इवन इसमें हम बहुत बरसों बाद मौत के सर पर नाचे. तो भाषा के लेवल पे हो या स्क्रिप्ट के लेवल पे हो, ये सिर्फ मास की फिल्म नहीं है, क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आई थी. इवन मेरे जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म में जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं उनको पसंद आई. तो आप इसे क्या मानते हैं, क्लास जो ऑडियंस है उनकी फिल्म है कि ये सिर्फ मास की है? Firstly, I try my best to make a mass movie first. I don't try to make it class. If there is class in that, then that is the design of the story itself. Okay, thank you. Emotion is universal. Yeah, emotion है. और एक आपसे है सवाल यश. ये जो फिल्म है, ये आप पहले भी, इसके पहले भी आपने काफ़ी मार धाड़ वाली फिल्में की हैं, लेकिन ये फिल्म बहुत डिफ़िकल्ट है. जब आप वो उस जोन में जाते हैं, कोल माइंस में जाते हैं, और जिस तरह से आपका है, तो वो जैसे एक स्पार्टाकस वाली जो फीलिंग होती है वो आती है जब आप वहाँ उतरते हैं, वहाँ के लोगों को जगाते हैं. तो इस रोल से निकलने के बाद आपको कितना वक्त लगा? पहली चीज़ ये ना, नमस्ते सबको. पहली चीज़ ये है मैडम, ये मार धाड़ वैसा हम सोचते नहीं, क्योंकि उसके पीछे अगर इमोशन हो तो सबको लगता है कि करना है. सो इट इज़ मोर लाइक अ बैटल में मार धाड़ बैकग्राउंड को चला जाता है, पर्पस बहुत हमेशा आगे आ जाती है. जो भी वॉर करते हैं और ये करते हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट एक्शन ऑन स्क्रीन, एक्शन फिजिकली, मेंटली भी बहुत एक्शन है. जो उसको चाहिए, उसका प्रॉमिस जो उसने दिया है, उसके लिए जो भी टक्कर आती है, जो भी मुश्किलें आती है, सब पार करके वो माँ का व्हाट इज इट, हर एक ड्रीम को पूरा करने की मेहनत कर रहे. एंड व्हेन वी से एक्शन, इट इज स्टाइलाइज्ड, you know, it is not something where you feel awkward. Or I always do films where I feel I can watch it with my family. Family audience should enjoy. Only then that number you will get, and that is the main purpose. But as he rightly said, the presentation, or we focus on masses. सीटी बजा के, ताली बजा के, नाच के थिएटर में सिनेमा देखना है. और उसके बाद भी there should be a strong content. If you see the thought process in this film, every dialogue will have a thought process where you can relate to any profession. So there is so much of writing. And in previous question you asked about the dubbing and this thing. I really appreciate that you have noticed that, because more than Kannada dubbing, our team has spent more time on concentrating on dubbing, because we need to respect the nuances of every language, and if we have to touch their heart, so we have to be right. So a lot of people have worked hard, Dr. Suri, and in every language there are a few people who have really worked hard for that. हमारे ओरिजिनल रॉकी के साथ काम करना आपको कैसा रहा? बहुत खुशी हुई, because you know, you get to learn a lot from him. The way he dedicated, the way he committed himself in spite of there was extreme conditions. जैसे हम शूट करते हैं ना, वो नॉर्मल नहीं होता.
क्योंकि इट इज़ नॉट नथिंग, सब बोलते होगे ना शूटिंग में पिकनिक जैसा था, आराम से मज़ा करके शूटिंग किया. आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वेर इन दैट मोड बिकॉज इट वॉज सो डिमांडिंग. And I think he set a example. That is something which was which I will have it for a very long time. I'll remember it for a very long time. हाय. ट्रेलर तो अमेजिंग था ही, लेकिन ये जो गाना हमने देखा वो भी दिल को छू गया और इमोशनल कर गया हम सबको. मेरा सवाल ये है कि अगर मैं विजन की बात करूँ तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 का क्या विजन रहा आपका? और जैसे हमने कोल माइल्स की कहानी हमने देखी है यहाँ पे, और इमोशंस हमने देखा है कि भरपूर है. वो इमोशन जो शायद अब हमें फिल्मों में इसके ज़रिए और माँ बेटे का इमोशन हो या जो कहानी कहने का इमोशन है वो साफ दिखता है. इस विजन के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे. This vision was made before we started chapter 1. Chapter 1 first half, we have only told half the story. So we are not going out of context from what we have shown in chapter 1. When you watch the movie, you'll understand that, you know, the scale or the new characters that have been introduced, it probably could have just been one movie that you were watching. So when you talk about the emotion, the mother's emotion is probably primary for this movie, and that has been very consistent for us. When you talk about the scale, it was always meant to be like that. There was no separate planning for just for chapter 2. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಅಲಿಯಾಸ್ ಯಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. KGFದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ KGF ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಜಾಬ್, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದು. ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ KGF ನಾವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ KGF 2 ಇಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಯ್ತು, ಹೇಳೋಣ ಆಮೇಲೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯू. मेरा सवाल संजय सर से है. सर, अगर मैं बात करूं आपके लुक की या डायलॉग की, तो अग्निपथ एक ऐसी फिल्म है जहां आपका लुक और डायलॉग सब काफ़ी ज़्यादा पसंद गया था. और जब हम ट्रेलर देखते हैं तो फिर एक बार आपका जो लुक है वो फैबुलस है और डायलॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बेस्ट पार्ट आपके लिए इस फिल्म के अंदर क्या है? बेस्ट पार्ट ये फिल्म में इसकी कहानी है, इसका इमोशन है, और मेरे को स्टार्स हैं, यश है, श्रीनिधि, रवीना जी, और सबसे बड़ा जो हीरो है वो प्रशांत है, जिसने इसके बारे में सोचा. यश सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि RRR ने एक ट्रेडमार्क जो है वो ऑलरेडी सेट कर दिया है ब्लॉकबस्टर हिट करके. कहीं ना कहीं प्रेशराइज फील कर रहे हैं अब, क्योंकि एक रिकॉर्ड ऑलरेडी सेट है और KGF से लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है कि हर कोई अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ KGF 2 ही तोड़ सकती है. तो कहीं ना कहीं प्रेशराइज फील करते हैं इस चीज़ को लेकर? नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट लुक एट इट एज अ pressure, it's a pleasure, सबको entertain करना. So more number of people, if they like it, that is where we concentrate. Of course numbers will come. What I believe is once the movie is released and if that works, if they like it, then they will promote the movie more than me. So then it is left to them how many people will reach it. So it's all this thing in initial stage pay. But yes, of course we are expecting a huge number. I never think like we have to break this record or that record. I'll only think about the potential of the industry or potential of what we have done. And record बनाने में ज़्यादा interest रहता है. The record तोड़ने का सोचता ही नहीं मैं. नया record बनाना है. मतलब everybody should do that. Whoever comes after us also, they should pass that thing and set a new benchmark so we can aim at bigger things. That's how I look at things. Thank you. Welcome. So my question is to you, Yash. So as we are seeing many pan-Indian movies are coming, जो साउथ स्टार्स हैं उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, काफ़ी एक्सेप्टेंस और प्यार मिल रहा है. So can we expect in future that you would like to collaborate with some Bollywood director? I mean Hindi director, okay. Yeah, why not? See, I always believe it is director's vision. And as an actor, you are only as good as your movie
and as good as your director can imagine you. So today, if you see this Rocky or this KGF, it is Prashant's imagination, and that is that he has started that thing, and he loves his heroes so much, so he presents us like that. So if there is any director who can present me the way audience want to see me or my fans want to see me, why not? I don't have a difference between the director from Hindi or Tamil or Telugu. It's just that they have to do a movie keeping everybody in mind. If they can do it, why not? मेरा सवाल प्रशांत सर आपसे है. कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जो रॉकिंग स्टार यशराज साहब हैं, आप खुद मौजूद हैं, रवीना मैम मौजूद हैं, संजय सर मौजूद हैं, और बहुत दिग्गज कलाकार आपके साथ हैं, मैं जहां तक मैं जानता हूं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के. कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. किस बिना पे आपने, जब रवीना सिर्फ एक लफ्ज कहती है कि घुस के मारेंगे तो थिएटर में आग लग जाती है. आई होप एवरीवन इज एग्री इन द ऑडियो सिटिंग अलोंग विथ मी. किस बिना पे कास्टिंग करी, और क्या हमेशा से जहन में संजय सर और रवीना मैम थे? From, I think when we started writing the script, we had written down Sanjay sir's name for when we started penning for chapter 2. We wanted somebody who was very powerful for the role of the Prime Minister, and I wanted somebody who was proper Hindi speaking and somebody who was mass, and we found the best mass Prime Minister that you will probably get to see on screen. Raveena, what was your reaction the moment they asked you to be on board and to play this character? Hello. Well, I think मैं जब प्रशांत से मिली KGF 1 ख़त्म ही हो रही थी उस समय, और ये उस KGF 1 के दौरान एक कंटिन्यूटी था जो KGF 2 में जाता था. तो KGF 1 के बारे में मैं इतना सुन चुकी थी ऑलरेडी सबसे, चाहे वो रितेश हो, फरहान हो या अनिल हो, उनसे इतना सुन चुकी थी कि मेरी एक होता ना, एक गुंजाइश ही नहीं होती कि नो, आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस. इट हैड टू बी दैट आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी. एंड ऑब्वियसली KGF 2 में देखेंगे आप कि प्रशांत के साथ काम करना, आई थिंक इट इज़ जस्ट हर एक आर्टिस्ट को जिस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं, तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू आई थिंक फॉर एनी एक्टर टू वर्क विद अ टीम लाइक दिस, एंड विद प्रशांत ऑफ कोर्स. So my question is, there are two driving forces in the movie, Adhira and Rocky. Both are exceptional, both are so powerful. So how did you manage these forces in the story to anchor the story? You need one big conflict, and I don't think it is just Adhira and Rocky. The conflict is multi-layered. There is a conflict within himself, within Rocky itself. That is something that I want all of you to explore when you come to see this. Adhira represents that big conflict for everybody. You know, that big, those big moments that you want to see in cinema. And there is a conflict with the Prime Minister also. There are a lot of people who bring in conflict. So basically we are talking about an empire. And you know, fighting for an empire is not easy. If there are only 2-3 people who want that empire is not worth it. So we have worthy adversaries as we go along in the movie, and I'd love for all of you to watch it. And I think I've waited a long time. Can you hear me, Raveena? I'm here. I had predicted a long time ago. मैंने कहा था कि आप हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत औरतों में से हैं और एक दिन बड़ी फिल्म स्टार बनेंगी. थैंक यू जी. और बहुत पहले बोला था ये. लेकिन आपने मेरी बात की मुखालिफत करते हुए कहा था कि मैं तो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ. जी वो सही है. और चांस मिलता है तो दमदार डायलॉग बोल देती हूँ पीछे. तो दो बातें पूछनी थी. एक तो ये कि इतना लंबा अरसा हो गया, कितना लंबा अरसा हो गया वो मैं नहीं बताऊंगा. आपने अपने आप को इतनी अच्छी तरह मेंटेन कैसे किया हुआ है, उम्र को कैसे धोखा दिया आपने? सर रात में फ्रिज में सोती हूँ. सुपर कूल. और दूसरे ये कि असल ज़िंदगी में तो आप पुलिस ऑफिसर नहीं बनी, लेकिन पर्दे पर पुलिस ऑफिसर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक के रोल्स आपने किए. तो अगर आपको दोबारा मौका मिले
तो क्या आप फिर भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहेंगे या सिनेमा में ही रहना चाहेंगे? सर बस एक दो को धोने का चांस मिल जाए, फिर उसके बाद वापस फिल्म्स कर लूंगी। शुक्रिया। अब जिस तरह से इंडस्ट्री बदल रही है, और एक दौर हुआ करता था कि भाई 25 हफ्ते फिल्म चल गई, सिल्वर जुबली हो गई, गोल्डन जुबली हो गई, हफ्तों में चला करती थी फिल्म। अब 3 दिन में पता चल जाता है फिल्म की क्या कंडीशन होगी, कहाँ फिल्म होगी। आपने वो 90s का वो दौर देखा है, और अब जिस तरह से एक फिल्म 700 और 800 करोड़ कमा रही है, अलग दुनिया में सब कुछ हो रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये जिस तरह से जो बदलाव हुआ है, सोशल मीडिया देख लीजिए आप, हर तरह से। सर संजय बाबा, आपसे शुरुआत करूंगा, फिर मैं चाहूंगा रवीना जी भी कुछ कहें इस पे। मैं चाहूंगा रवीना जी शुरू करें, और मुझे भी लगा था मैं कम बोलता हूं। Ravina, if you can throw some light on that. What's your take on that? You have seen both the faces. मैं समझती हूँ कि आई थिंक आवर इंडस्ट्री हैज़ ओनली ग्रोन एंड खुशी है, जैसे यश हर बार कहते हैं कि अब हम पैन इंडिया हो गए हैं, हमारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट फ्यूज़ होके इंटीग्रेटेड होके एक इंडस्ट्री बनती जा रही है एंड इट्स अ स्ट्रॉन्गर फोर्स। तो वो एक बहुत मज़ेदार बात है। पहले तो हम जाते थे बॉम्बे से करने फिल्म साउथ में, चाहे वो तमिल हो या मलयालम हो या तेलुगु हो, लेकिन अब एक जैसे एक लिटरली साथ जुड़ गया है, और वो बहुत ही मज़ेदार बात है। उसके अलावा जिस तरीके से नंबर्स अब बढ़ गए हैं, आई थिंक वन हैज़ टू इवॉल्व विद द टाइम्स, एंड मैं ज़रूर ये कहूँगी दैट आई एम वेरी लकी एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम स्टिल रेलिवेंट, कि मैंने वो फेज़ भी देखा और ये फेज़ भी देख रही हूँ, और खुशी की ही बात है। एंड मे आवर इंडस्ट्री ग्रो बिगर एंड स्ट्रॉन्गर ऑलवेज। अनिल सर, अनिल जी हाय, इधर इस फिल्म के साथ ही जर्सी भी रिलीज हो रही है, तो थिएटर्स को लेके और जो वो है उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आई थी? सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड। जी, इस डेट को जर्सी भी रिलीज हो रही है, तो थिएटर्स को और जो टाइमिंग्स हैं उनको लेकर कहीं कुछ दिक्कत आई? नो, आई डोंट थिंक सो। 2 पिक्चरें हमेशा बड़े डेट पे आती है एंड बोथ सर्वाइव। ईद पे भी 2 आ रही है, दिवाली पे 2 आती है, सो इट्स ऑल हैंड इन ग्लव। जानना चाहूंगी कि क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, जिस तरह से केजीएफ एक मास मूवी है, सो केजीएफ 2 को लेकर कितना एक्सपेक्टेशन होगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर? प्लीज 1 by 1। संजय सर। हेलो। सॉरी, इन्होंने सुना ही नहीं है, वापस बोल दीजिए एक बारी। सॉरी, फिर बोलेंगे प्लीज। या सो क्या उम्मीदें हैं बॉक्स ऑफिस से? बॉक्स ऑफिस पे कितना एक्सपेक्टेशन होगी उनकी? आपसे पूछ रही हैं कि क्या उम्मीदें हैं बॉक्स ऑफिस को लेकर। अभी से एडवांस बुकिंग चालू हो गई है, लोग इतना ज्यादा क्रेज है, इतना ज्यादा बज है, इतना पॉजिटिव बज है, कमाई हुई थी। हाँ, सो केजीएफ 2 को लेकर क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होगी बॉक्स ऑफिस को लेकर? हाँ प्रीति बोल दिया मैंने, बता रहे हैं हम। मैंने जब प्रशांत और यश मेरे पास आए थे, उसी टाइम मैंने बोला था कि ये तूफान होगा और आग लगेगी। तो मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, और आप लोगों का प्यार और पब्लिक का प्यार देखकर मुझे यही लगता है कि जो मैंने सोचा था सही होगा। ओके, रवीना मैम। Prashant sir, with KGF, another movie that's creating enough buzz is Salar. Will audience be surprised or get an glimpse of Salar attached at the end of KGF 2 anywhere? You should ask the producer that. I am not aware of that situation at all. Karthik sir, Prashant sir, Srinidhi, Yash sir, on behalf of entire media and Raveena ma'am and Sanjay Dutt sir, निಮಗೆ कन्नड़ में बोलना चाहूँगा, निಮಗೆ मुंबईಗೆ स्वागत। थैंक यू रवि। थैंक यू। मुंबईमध्ये आपला स्वागत आहे। ओके, अब क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, एक सेकेंड। यस सर, केजीएफ फ्रेंचाइज में सर आप मुंबई पर राज करते हैं, फिर इंटायर वर्ल्ड आपका टेरिटरी बन जाता है। रियल लाइफ में भी केजीएफ चैप्टर 2 के बाद पूरा वर्ल्ड जो है आपकी टेरिटरी बनने वाला है, लोग आपको बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। सर क्या कहेंगे, जो ट्रांजिशन हुआ इस ट्रांजिशन को लेकर क्या कहेंगे? फर्स्टली आई वांट टू थैंक यू एंड लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, और वैसे लोग बहुत सारे प्रमोशन किए केजीएफ चैप्टर 1 में। आई सॉ देयर वाज वन गाय कॉल्ड बॉलीवुड क्रेजीज, उनका भी यू हियर, थैंक यू मैन।
when we came to Bombay or when we came here, not many people knew about us, but I think Ravi and Surya, I remember your name, yeah, because it was very sweet. जिस तरीके से ने आप लोगों ने हमारा फिल्म को तब promote किया ना, and I would want to remember you guys like this lot of YouTubers in every state, every language. I don't know for what reason they all supported us with open arms. And आपके दिल में, if I can have my territory, that is my territory. Thank you. My question to you: you made this movie as a Kannada movie, but now this is the pride of Indian cinema, and now. What do you see? How do you see the future of Indian cinema? If you throw some light. This happened by accident, and you're asking me. I'm not qualified to tell you that. There are a lot of people who are going to try this. They're going to make this much better. They're going to blur these boundaries, and I'm going to be. I hope I'll contribute to that. Thank you very much. Thank you so much, ladies and gentlemen. You guys have been amazing. Give yourselves a big round of applause. It's time for a quick photo op. Relax. We'll do it. Thank you. Remove the chairs, Baba. Ask somebody. Also would like to invite on stage Thadani Saab, Anil sir. One more time, please. We have a surprise, another surprise drop. Violence, violence, violence. I don't like it, but I avoid. But violence likes me. I can't avoid. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir, ma'am. And now it's time for a quick photo op. Field clear कर दीजिए थोड़ा. आइए. थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग. तो इधर से.